Good evening, guys. A very good evening to all of you. How are you all doing? Am I audible? Audio video is clear? Good evening, guys. A very clear. चैट ओपन कर लेता हूं मैं ताकि मुझे पता चलता है आप लोग क्या बात कर रहे हो. यस, एवरीथिंग इज फाइन. क्या बात है. तो मतलब उसी दिन कुछ स्पेशल था जो हमारी क्लास खराब हुई थी. हाँ? वही फर्स्ट क्लास. सवाल है. Welcome, guys, to another session, part 3 of GATE 2025 Fluid Mechanics Shortcut series. Okay, which we will discuss on daily basis, Monday to Friday at 10 p.m. These are my subject expertise, which I am helping and discussing with chemical engineering aspirants from August 9th, 2013. So you can see almost 12 plus years of experience I have. So today's topics will be going to be fluid statics, Pascal's law, and if we get the time, then we will also discuss the hydrostatic forces on submerged bodies. Okay. Then we will discuss the 25 years of PYQ. So, if you guys are ready, shall we start our discussion? सर, क्या आप एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेशन कराने वाले हो? बताओ, एफएम की क्लास में एप्टी की बात हो रही है. यस खुश. नमस्ते नमस्ते एवरीवन. In January, I will start a practice series on aptitude, for aptitude, especially for GATE chemical engineering exam, which will also be there for all other engineering aspirants also from other streams in January. But I will do. Okay. Most probably first week after first week of January we will start. So if you guys are ready, shall we start our discussion on today's topic? Fluid statics. So just mention here in the chat. If you are ready, then we will start. Otherwise, we will wait for you to get ready. Ready. I can see almost 20 people are there and only 2 people are ready. कमाल है. ऐसा थोड़ी होता है. रेडी सर. अरे नितिन, आप ही एक ही बार को कितनी बार बोलोगे? गिनती थोड़ी बढ़ेगी उससे. वो तो आप ही. कमाल आदमी हो यार. Fluid statics, guys, we have discussed already, is the study of fluid at rest. ठीक है. And fluid at rest means, see, we know that we saw in previous part that when shear stress act on the fluid, what happens? Fluid undergoes continuous deformation, or we can say fluid starts flowing. ठीक है, which is you can also write as continuous deformation. In short, I am writing like this: continuous. So here we can conclude that if fluid is at rest,
That means no shear stress is acting. No shear stress is there. Correct? I hope it is clear. ठीक है, ये एक वन important point है जो आपको clear होना चाहिए. Now further, if we talk about the type of forces acting on a fluid element. So if we talk about a fluid element, suppose this is my some fluid element. Okay, let's for our convenience, I will take the axis like this: x-axis, z-axis, and y-axis. Y-axis you can think like normal to screen. Okay, normal to screen. So here, this length is suppose del x. This length is suppose del y, and this length is suppose del z. So you can understand the volume of the element will be delta V, volume of fluid element, which will be delta x into delta y into delta z. करेक्ट. अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करें तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे लगता है बॉडी फोर्स, और यू कैन से वॉल्यूम फोर्स. बॉडी फोर्स और वॉल्यूम फोर्स यू कैन डिफाइन एज द फोर्स एक्टिंग ऑन एंटायर बॉडी और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, gravity force, you can say the weight, it is a kind of body force because it acts on the entire element. And you know what will be the gravity force? That will be mass into g, and mass is density of fluid element into volume of fluid element multiplied by g. Okay, this is the body force that act on a object, sorry, fluid element. ठीक है, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं निखिल, इट्स ओके, आप ही की क्लास है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर गाइस. ठीक है, यह आपका बॉडी फोर्स हो गया. नेक्स्ट आता है इसमें आपका सरफेस फोर्स. दैट एक्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कह रहा हूँ सॉरी, फ्लूइड एलिमेंट, सरफेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स. ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट. यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका सपोज दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट having the volume dv, delta v you can say. So you know the forces acting over the surface on the fluid element, like suppose this is the surface, the top surface. Okay, if I say this is the fluid element, can you see this? Okay, this is my fluid element. So here on this surface the force acting, top surface I am talking about. So if that force acting on this surface is in this direction parallel to the surface, then that is called shear force, or you can say tangential force. Parallel to surface. And second is normal force, for example pressure force, which acts normal to the surface, perpendicular to the surface, perpendicular to surface. I hope you remember this symbol, perpendicular. Okay, like this. Is it clear?
shear force क्या होता है? We have already discussed that thing in the previous section. Dawn 16 गेट 2027 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया अनअकैडमी पे. आई वुड सजेस्ट कि आप जब ये सेशन एंड होगा तो देख लेना बाद में. इस सेशन के एंड में आई विल इन्फॉर्म अबाउट इट. यस, ओके. नाउ अब एक फ्लूइड एलिमेंट की बात करें, स्टैटिक फ्लूइड एलिमेंट की, तो यहाँ पे की पॉइंट्स हैं फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड एलिमेंट. फॉर अ स्टैटिक फ्लूइड you should know that summation of all forces acting on the element will be zero. ठीक है, ये की पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. एंड यू गाइज ऑल्सो नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, summation of all forces acting on any object will be equal to mass into acceleration. If summation of all forces is zero, so it is obvious mass into acceleration is zero. And you know mass cannot be zero, so acceleration will be zero. मतलब कोई velocity नहीं है. Okay, so that how the acceleration and velocity things will come for the static fluid and moving fluid, that we will see in fluid kinematics, which we will start in part 5 most probably. These two parts 3 and 4 will be totally dedicated on fluid statics and their PYQs. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. अब यहाँ पे एक और टर्म आता है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्रेशर. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल एंड कंप्रेसिबल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ओके, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल एंड कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. अब यहाँ प्रेशर की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट क्लियर होना चाहिए अबाउट द प्रेशर. दैट प्रेशर acting on a point in a static fluid is independent of n unit vector n, or you can say orientation. ठीक है, ओरिएंटेशन से हमारा क्या मीनिंग है? सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है, ये दिस इज सम पॉइंट इन अ फ्लूइड एलिमेंट. ओके, so the pressure acting on this point in this direction, 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 from this direction, every direction will be same. मतलब अगर मैं इस पेन का अगर निब देखूं, you can see this pen nib is surrounded by the air. So the atmospheric pressure, you know, atmospheric pressure will be there. The atmospheric pressure acting by this air on this nib from all the direction, like this, all the 360 degree or front, whatever, will be same. Okay, that is the meaning. ठीक है, अब एक important point जो आपको पता होना चाहिए about the fluid statics. ठीक है, we have discussed that in proper details in our detail course. और यहाँ पे हमारे पास उतना टाइम नहीं है और ना हम वेस्ट करेंगे डेरिवेशंस वगैरह पे, तो आपको मैं क्लियर कट आइडिया दे रहा हूँ.
in static fluid element, force density, ठीक है, or you can say pressure force density basically. Pressure force density denoted by small f in suffix p we write, which is nothing but the pressure force acting on a fluid element over per unit volume of fluid element, delta v. Like mass upon volume, mass density, weight upon volume, weight density, or specific weight, you can say pressure force upon volume, pressure force density will be equal to minus grade operator p, or you can say gradient of p. और आई होप आपको आइडिया होगा ग्रेड ऑफ पी हम कैसे लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डो पी ओवर डो एक्स आई प्लस डो पी ओवर डो जेड, सॉरी डो वाई, प्लस डो पी ओवर डो जेड. ठीक है, हेयर आई कैप, जे कैप, और यहाँ पे आपका आ जाता है के कैप. बाकी इसके ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस वगैरह में कोई डाउट है तो कोई टेंशन नहीं है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम वो डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक बेसिक आइडिया. अदरवाइज आप वेक्टर कैलकुलस देख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से आपका इस तरह से आप फोर्स डेंसिटी ऑन एनी फ्लूइड एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. दिस शुड बी क्लियर टू यू. इस इक्वेशन का क्या रोल है वो देखते हैं. मैं एक थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. इन अ स्टैटिक फ्लूइड एलिमेंट, let's say this is my fluid element, dx dy dz, volume is delta v. Okay, v is acting in downward direction. The axis we have taken x, z, y, normal to the screen. So here you can understand summation of all forces acting on the fluid will be zero since it is a static fluid element. And what are the all forces acting? You know, the body force acting on the object plus pressure force acting on the object, which is the normal force. Tangential force will not be there because it is a static fluid. Okay, and what is the body force? You know, body force is density into volume into g. Fp is this, you can see Fp delta p, gradient of p into delta v. This will be zero. तो यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट ग्रेडियंट ऑफ p प्लस रो g इक्वल टू जीरो. ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स. You should know that gradient of pressure plus rho g vector, g vector, because we are writing it this in vector form, equal to zero. ठीक है, अब इसका यूज क्या है, कैसे है वो देखते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड इन एक्स डायरेक्शन, you can write it as minus of dou p by dou x plus rho times of gx equal to 0. And here gx is 0
because no gravity is acting in axial direction. Whatever g is there, that is only in z direction. So dou p over minus of dou p by dou x equal to 0. ये आपका केस आ गया. So you can see pressure is independent. Pressure gradient in x direction is constant, or we can say pressure is independent of x. There is no variation of pressure in x direction, or you can say pressure is constant in x direction. ठीक है. इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड एलिमेंट है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, तो इस फ्लूइड एलिमेंट में अगर आप एक्सियल डायरेक्शन में चेक करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, ठीक है, on this point or any other point, the pressure will be same throughout the x direction. Okay. Similarly, if you check in y direction, so here you can also see that minus dou p over dou y will be 0, means pressure is independent in y direction, means this, normal to the screen on a horizontal line. Okay, as you know, gy is 0. I hope these things are clear, you are understanding. अब बात करते हैं z डायरेक्शन में, which is the upward direction, vertical direction, you can see. So in z direction, we will write it as minus of dou p over dou z plus rho times of gz equal to 0. And you know what is gz here? Gz equal to minus g, because g is acting vertically downward, negative to z. आपको पता होगा ना, z ऊपर की तरफ जब पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो माइनस जी, यू कैन पुट दैट वैल्यू हियर. तो आपका ये हो जाता है माइनस डो पी बाय डो जेड माइनस रो जी इज इक्वल टू 0, और यू कैन से माइनस ऑफ डो पी बाय डो जेड इक्वल टू रो जी. ठीक है. और यहीं पे आप देख भी सकते हो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है वो हम देखेंगे इन फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स डिटेल में, बट यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लेते हैं. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स आर दोस वेयर डेंसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट तो यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस थिंग. ठीक है. अब उसे आपको इंटीग्रेट करना है, आपके कैसे इंटीग्रेट करोगे वो भी देख लेते हैं. तो सपोज एक नया एलिमेंट ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से दिस इज सम टैंक. This is the free surface of the liquid. Tank is full of water or any other incompressible liquid, you can say. So at this point, you know what is the atmospheric pressure acting? PATM. What is the height? Let's say Z naught. Okay. And we are interested to find out the pressure at this point, which is H distance downward. Okay. Where depth is H, or you can say Z from the surface. Okay. Here we are taking free surface as a reference, as a datum line. Free surface of liquid. So here you can see when you integrate, minus dou p will be equal to rho g dou z. You can integrate this. G is constant, you know, rho is constant. So you can see when z is equal to z naught, means here pressure is PATM. At z point, you can see pressure is P. When you rearrange this, you will get P is equal to PATM plus rho g h. What is h? Here you can see in the diagram, h is equal to z naught minus z.
Okay, so you can, I hope you guys can solve this. So this is what? This is called fundamental equation of hydrostatics. Hydrostatics is study of liquids at rest. ऐसे ही होता है aerostatics. Aerostatics is the study of air at rest. Is it clear? The hydrostatic equation, guys? Yes. Okay, wonderful. So here you guys can see H. If H increases, and if you go for depth in depth of the liquid, pressure will increase. Why it is increasing? Why pressure is increasing? Because you can see here that P is equal to P ATM plus rho GH. P ATM is the atmospheric pressure. You know that. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the pressure exerted by the air present in atmosphere or the air columns in the atmosphere. है ना? But what is this rho GH? Rho GH is the pressure due to weight of the fluid. ठीक है? It should be clear to you. और यहीं से इसी का एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ विच वी विल सी लेटर नेक्स्ट. तो ये हमारा हो गया प्रेशर के बारे में. ओके. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड्स. अब प्रेशर के बारे में एक पॉइंट और है, वो आप सभी को पता ही है, बट दैट इज माय वर्क टू डू. प्रेशर वी कैन डिफाइन इन थ्री वेज. एब्सोल्यूट प्रेशर which is the sum of atmospheric pressure plus minus minus गेज प्रेशर. ठीक है. और यहाँ पे आपको आइडिया होगा, इफ गेज प्रेशर इज पॉजिटिव, sorry, greater than atmospheric pressure, if gauge pressure is greater than atmospheric pressure we write it as positive. मतलब P absolute equal to P ATM plus PG, we add it. And if gauge pressure is negative, that means less than atmospheric pressure, so we write absolute pressure as atmospheric pressure minus gauge pressure. And this also should be clear to you that if gauge pressure is less than atmospheric pressure, मतलब नेगेटिव है, तो इस गेज प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं. ठीक है. ऑल्सो नोन एज वैक्यूम प्रेशर. एनी प्रेशर बिलो 1 atm इज वैक्यूम प्रेशर, यू नो दैट. ठीक है. इसे अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज दिस इज माय डेटम लाइन विच इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और यू कैन से absolute vacuum, nothing is there. Okay, this is some reference line, suppose for the atmospheric pressure. My point, my system is at point 1. Let's say this is the point 1 where I have my pressure. If you want to measure from absolute 0, so you know that will be P1, pressure at point 1, absolute pressure. क्योंकि 0 से start कर रहे हो आप, P1. And what will be this P1 here? So you can see this P1 here will be equal to atmospheric pressure plus this. This is the atmospheric pressure. You can see this margin. So this value is the gauge pressure. Let's say PG1. So P1 will be equal to P ATM plus
gauge pressure, PG1. Okay. Similarly, if you have any point at 2, let's say this is the point 2. Here you want to measure the absolute pressure P2. So what will be P2? You can see that this P2 will be equal to atmospheric pressure. यहाँ लिख देता हूँ P2 will be equal to atmospheric pressure माइनस मतलब इसमें से ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो ये वैल्यू तो आपका P2 आ जाएगा विच इज नथिंग बट Pg2 और यू कैन से P वैक्यूम. Okay. So I hope it is clear about the pressure. The clarity you guys got. Generally in the calculation and all we will use the absolute pressures. बट यहाँ पे एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं. हम गेज प्रेशर भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जो कैलकुलेशन हम करते हैं लाइक मैनोमेट्री वगैरह में हम गेज प्रेशर की करते हैं. सरफेस टेंशन में जो प्रेशर था वो भी गेज प्रेशर था. गेज प्रेशर से हमारा मतलब क्या? देखो एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं. सपोज मेरे पास एक फ्लूइड एलिमेंट है सिलेंड्रिकल शेप में. ठीक है. इनसाइड अ रिवर और इनसाइड द ओशियन. ओके. और या फिर एक काम कर सकते हैं फ्लूइड एलिमेंट को हम यहाँ ले लेते हैं. ठीक है. दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट फ्री सरफेस. So what is the pressure acting at the top here? You know PATM. What will be the pressure acting at this point? वो अलग स्टोरी है. But what will be the direction? Downward or upward? Tell me. Mention. You can write D or U simply. जो बॉटम है वहां पे जब मैं प्रेशर की बात करूंगा तो दिस प्रेशर की डायरेक्शन क्या लूंगा मैं? डाउनवर्ड और अपवर्ड? व्हाट डू यू फील? इससे पहले आप आंसर बताओ. जल्दी जल्दी बताओ. मैं आगे बढ़ जाऊंगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. बोलो भाई बोलो. सिर्फ मैं बोलने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे. आप लोग भी बोलो. अच्छा चलो बोल नहीं सकते टाइप कर दो. कुछ तो बोलो. डाउनवर्ड. नो 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 नो. इसलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चीजें. देखो मैं शॉर्टकट में इसका मतलब ये नहीं है सारी चीजें बस आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ. मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ चीजें. इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है. मैंने इस दैट्स आई टोल्ड यू 12 to 15 मार्जिन लेके चले. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज नॉर्मल एंड कंप्रेसिबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट पर यूनिट एरिया. कंप्रेसिबल फोर्स. नॉर्मल एंड कंप्रेसिबल. अब यहाँ पे बताओ डाउनवर्ड में जब मैं बात करूंगा बॉटम सरफेस पे बात करूंगा यहाँ पे कंप्रेसिबल फोर्स का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड और डाउनवर्ड? आई होप यू गॉट इट. समझ रहे हो ना विनोद? एंड व्हाट विल बी दिस प्रेशर? PATM प्लस रो जी एच. ठीक है. मतलब अंदर अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है अलग जिसकी डेंसिटी है रो. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसमें आप देख सकते हो. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा पी बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस? प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? प्रेशर एट द बॉटम minus pressure at the top. So you can see what is pressure difference. Rho GH. इसका मतलब और what is rho GH? अब यहाँ देखना इसमें से मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया. सिर्फ rho GH की बात हो रही है. rho GH की बात हो रही है. इसका मतलब क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि rho GH is nothing but a gauge pressure? यही अभी हमने पढ़ा था ना. एब्सोल्यूट प्रेशर इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर दिया बचा क्या? व्हाट इज रिमेनिंग? If you cancel out the atmospheric pressure, what is remaining? Only gauge. Okay, so this rho gh can also be termed as gauge pressure. यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेशर डिफरेंस इज बेसिकली द गेज प्रेशर.
in this scenario? I hope you are understanding this. Pressure difference, that is basically delta P, is nothing but equal to gauge pressure. Got it? And what is rho gh? Pressure due to the weight of the fluid. Okay, pressure due to the gravity, you can say. ग्रेविटी से ही तो वेट आता है. आई होप ये सब आपको क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पास्कल्स लॉ. इसी में, ठीक है. अब पास्कल्स लॉ से हमारा क्या मतलब है? ये मतलब है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट in a fluid at rest in a closed system like this, any change in pressure applied at any point in the fluid is transmitted undiminished throughout the fluid in all directions. इसका क्या मतलब हुआ? देखते हैं. This principle implies that the pressure at any point in a static fluid is isotropic. Isotropic means पढ़ा होगा ये आप लोगों ने, equal in all directions, independent of x, y, z, and propagates uniformly across the fluid and container walls. Propagate मतलब transmits. ठीक है. इसे आप कैसे समझ सकते हो? देखो, ये एग्जाम्पल लेते हैं. मेरा ये क्लोज कंटेनर है. आई हैव दिस क्लोज कंटेनर. प्रेशर एक्टिंग इज P नॉट. तो व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम? यू नो P नॉट प्लस रो जी एच. करेक्ट. नाउ हियर इफ आई इंक्रीज द प्रेशर by delta P, मतलब P naught plus delta P if I did. So what will be the pressure at the bottom? You can understand P naught plus delta P plus rho GH. Okay. So what is the difference? इसमें और इसमें प्रेशर डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा? रो जी एच. यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालोगे क्या आएगा? रो जी एच. सो दैट मीन्स इट इज दिस, जो भी आपने प्रेशर अप्लाई किया, द सेम हैज बीन ट्रांसमिटेड एज इट इज. देयर इज नो डिफरेंस. Because at the bottom, if in these two cases, if delta P is different, मतलब P bottom minus P top अगर different आता, तो हम कहते कि वो कुछ variation हुआ. But यहाँ different आया ही नहीं. There is no difference in the pressure at bottom and top. Rho GH is here, rho GH is here, just like we did in this case. है ना? This is the point. कि the pressure applied at any point in the fluid transmitted as it is मतलब undiminished, no variation throughout the fluid in all all direction. ठीक है. और ये जो पास्कल्स लॉ है, दिस वाज द बेस, you can say plot, you can say the fundamental or the building block of hydrostatics, hydraulics. ठीक है. हाइड्रोलिक मशीनरीज होती हैं, यू नो अबाउट द हाइड्रोलिक्स एंड ऑल सिस्टम. इन कार, बाइक्स एंड ऑल, दे यूज हाइड्रोलिक सिस्टम्स. ओके. बाइक्स मीन्स हाई स्पीड बाइक्स, नॉर्मल ये स्प्लेंडर वगैरह नहीं. ठीक है. तो उनमें हाइड्रोलिक्स में क्या है? अब जैसे अब कार है, इन कार, यू जस्ट कार इज मूविंग एट सम स्पीड. थिंक लाइक दिस, व्हाट इज द वेट ऑफ द कार? जस्ट इमेजिन, व्हाट इज द वेट ऑफ द कार? जो आप कार मूव कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कार का मास कितना होता है? मिनिमम 100 kg तो होता ही होगा ना. मिनिमम 100 kg तो होता ही होगा. ज्यादा भी हो सकता है, वैसे ज्यादा ही होता है. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. 100 kg. Just think like this. In your real life, can you lift 100 kg mass? How many of you can do that? Hardly no one. जितना भी होता है, just taking the exam reference value as example. Like suppose 100 kg is there. 1500 kg सोचो, 1500 kg. Doesn't matter. We can't lift even 100 kg.
and plus car is moving in motion. Suppose the normal speed 40 km/h. So you know what will be the momentum? Mass into velocity. Okay, you can convert that into meter per second and all that. If I ask you, stop that car from your hand, कैन यू डू दैट? नो, नॉट एट ऑल। आप खड़े हो जाओगे, कार आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको फील भी नहीं होगा और बाद में आपको जब होश आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि हम तो अर्थ छोड़ चुके हैं। ठीक है? बट ऐसा कुछ करना मत। डोंट ट्राई दीज़ थिंग्स बाय योरसेल्फ। जस्ट गिविंग यू द एग्ज़ाम्पल्स। मूवीज़ में होता है, रियलिटी में मुश्किल है। So, but if you are sitting in a car, you are just putting your legs, your foot on those pedals, ठीक है? जो ब्रेक्स होते हैं आपके, उनके ऊपर आप छोटा-सा अपना पैर से फ़ोर्स लगाते हो, कितना फ़ोर्स लगाते होगे? पूरा फ़ोर्स तो लगाते नहीं आप। You don't apply your entire body weight on those brakes. You just push them, press them little bit, है ना? But and because of that, you are able to stop the car. Can you imagine? And a small force you are applying, and you are able to stop the car. Such a huge thing this is. Okay, so this is what you can understand. How? See this. When I will apply some pressure at this point in this is container, suppose P1. So what is P1? You know P1 will be force acting per unit area, normal to the normal direction. The force is F1, area is suppose A1. Now this is small size container, which is your brake, by the way. You can think like this is the brake connected to a large container by this small communication pipe or something. When you apply the fluid force here, pressure here, so this liquid moves as it is. So you know same pressure will transmit here. So here the pressure will be P2. And what will be the P2? Force acting per unit area, F2 upon A2. And you know P1 is equal to P2. So F1 upon A1 equal to F2 upon A2. And it is obvious area here has been increased. You can see F2 will be A2 upon A1 multiplied by F1. Okay, so you can see area has increased. As area increased, you can see force will also increase. आपने थोड़ा सा लगाया बट वहां कार पे कितना ज्यादा फोर्स लगा थैंक्स टू हाइड्रोलिक्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ. ठीक है. दिस इज पास्कल्स लॉ. यस विनय, वी हैव सीन दिस. दिस इज पास्कल्स लॉ. Provided that it shall be incompressible fluid. It should contain incompressible fluid. So I hope these things are clear, guys. Yes, okay, wonderful. So this is something about the पास्कल्स लॉ. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो हम स्टडी करेंगे दैट इज मैनोमेट्री. मैनोमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्रेशर मेजरमेंट और द प्रेशर मेजरिंग स्टडी नहीं, यू कैन से बेसिकली द methods to measure the pressure.
ठीक है। व्हाट इज प्रेशर मेजरमेंट एंड ऑल, तो उसकी बात कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई एम टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम माय क्लास वीडियोस, class PDFs, to cover this fast theory part. Pressure measuring devices, any device used to measure the pressure at a particular location or a difference in pressure between the two locations in a fluid is called pressure measuring device. And these pressure measuring devices we can divide in two categories: manometers and pressure gauges. Okay, pressure gauges are also known as mechanical gauges. अब ये जो प्रेशर गेजेस होती हैं, these are used, they measures the gauge pressure only. ठीक है, because they take the atmospheric pressure as datum. Okay, next, manometers use do the pressure calculation with the help of liquid column balance. ठीक है, and pressure gauges can do liquid column balance as well as they can use dead weight or spring to measure the pressure. Like here you can see piston or cylinder assembly. I have taken this example also. Here suppose I have some gas. ठीक है, so this is the piston. Here I have put it some weight to balance the piston. You know, force exerted by the gas shall be balanced by the weight of the piston or dead weight or the spring. Based on that, we calculate the pressure, gauge pressure. And there are the examples of pressure gauges: diaphragm pressure gauge, Borden tube pressure gauge, dead weight pressure gauge, bellows pressure gauge, etc. So we have not discussed that thing because this is the part of your process instrumentation. I hope you have studied this in process instrumentation. ठीक है, नहीं तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा ही ऑलरेडी। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपका पार्ट है फॉर द गेट। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनोमीटर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनोमीटर्स, तो वी कैन क्लासिफाई द मैनोमीटर्स इन categories like this: simple manometers or differential manometers. Simple manometers are piezometer, simple YouTube manometer, single column manometers. Differential में आ जाते हैं YouTube differential manometer, inverted YouTube differential manometer. And simple YouTube manometer is, further you can divide into categories: vertical or inclined, and single column also vertical or inclined. Single column manometers are also known as well type manometers. ठीक है, well type manometers. अब मैनोमेट्री मीटर्स का जो सबसे बेसिक थिंग है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? तो फॉर दैट आई विल टेक दिस सिंपल एग्जांपल। Like if you see, this is some free surface. Here you can see this. This is water only. Now if you look at this reference line, this is horizontal line. Okay, मैंने थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, बट यू कैन अंडरस्टैंड। सर इंडस्ट्रीज में मैक्लोइड गेज, हाँ वो सब उसी में आ जाती है ना। मैक्लोइड गेज किस टाइप में आती है? बॉर्डन ट्यूब है, स्प्रिंग में है, वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, तो if you see this line from the free surface has a distance h, so what will be the pressure at point A, point B, point C, point D, point E, point F or point G? Same, and that will be equal to atmospheric pressure plus rho gh. Okay, so this is the point. Pressure at all these points on a horizontal plane inside the fluid will be constant. Okay, this is the fundamental of manometry. You should know that. In a inside the fluid, on a horizontal plane, at each and every point, pressure will be same. This is what hydrostatic paradox is. Okay, but if there are two fluids, like you can see point H and point I, if you look on this axis, on this horizontal, so this is point I, this is point H. So here pressure will not be same. That will be different. Why? Because here at I, you can see only water is there. But in case of point H, we have water plus mercury. Two fluids are there. So when two fluids are there, two different densities are there, weight will be different. है ना? That is the logic. I hope it is clear to all of you. ठीक है, यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है. ठीक है, अब मैनोमीटर्स वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका पीजोमीटर्स. Piezometer is what? Uh, you can say simple vertical column, or you can say tube, where in which one end is connected to column or the fluid and other is open to atmosphere. ठीक है, for example, this is my container having some fluid. Okay, here I want to measure the pressure at this point. Let's say this is point A. I want to measure the pressure at point A. Okay, what is the pressure at point A? So I don't know. What I will do, I will connect a tube like this, where this is open to atmosphere. Now you know that it is obvious. Okay, here you can understand this easily. If atmospheric pressure is greater than the pressure at point A, if so, what will happen? Atmospheric pressure means inside the column, all the air will fill, only air particles will fill, and they will move to this side because air is more, atmospheric pressure is more. So there is no use of using piezometer, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे तो इसकी कोई बात ही नहीं होगी, इसका कोई सेंस ही नहीं होगा. मेक नो सेंस. So it is used obviously when PA will be greater than atmospheric pressure. Only then it will be used. So what will happen if pressure at point A is more than the atmospheric pressure? So you can understand fluid flow from high pressure to low pressure, or otherwise you can think like fluid will be dragged or pushed from high force to low force. तो यहाँ पे A point पे force ज़्यादा है, pressure ज़्यादा है, तो this fluid in this line, in this piezometer, you can see throughout this horizontal plane, ये जो आपको region दिख रहा है, ठीक है, this region which you can see, pressure will be same because this horizontal line is along the A. Pressure at point A and pressure at this point will be same, yes or no? At pressure point at point A and pressure at this point will be same. It is obvious, है ना? Because they are on the same horizontal plane, and the fluid will rise against the atmospheric pressure up to a certain height. Let's say this height is h. Okay, so you can measure this pressure.
pressure exerted by this fluid, the weight of the fluid on this point, that will give you the pressure at point A. It will be rho G H. Rho is the density of fluid, G and H. This is piezometer. Simple. सर रन ऑफ बताइए. रन ऑफ मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स में रन ऑफ क्या आ गया? ठीक है. तो दैट्स हाउ वी कैन डू द थिंग्स यूजिंग पीजोमीटर्स. अब यहाँ पीजोमीटर में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. वो क्या है? बेसिकली द लिमिटेशंस. ठीक है. देयर आर सम सर्टेन लिमिटेशंस फॉर पीजोमीटर्स. फर्स्ट थिंग, can't be used for high pressure measurement. You can understand, because if pressure is high, then column fluid is rising in the column. So you can understand the length of the column, height of the column shall be very large, which is not practically feasible. Okay. Second thing, cannot be used to measure negative gauge pressure, as I have told you. Okay. If atmospheric pressure is more, PA is less. PA is less means negative gauge pressure. है ना? So it will not work. Similarly, can't be used to measure the pressure of gases. ठीक है. Why? Because generally gases are invisible, transparent. So how will you do this? Plus, even if you think like we can add some colors in the gases, but still you will not be able to do. Why? Because gases are very light, and if gases are light, so this height will be very very long. ठीक है. तो it is not feasible for the gases. और यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक कॉमन रूल ऑफ थंब है. When we talk about the piezometers, तो diameter of piezometer columns, जो आप piezometer columns यूज कर रहे हो, इनका diameter, okay, shall be greater than equal to 10 to 12 mm. ठीक है. 10-12 mm से ज्यादा ही होना चाहिए. इक्वल रख सकते हो, बट जनरली ज्यादा रखते हैं. वाई? टू अवॉइड कैपिलरी एक्शंस. अगर कम होगा तो कैपिलरी एक्शन में अकर, and if capillary action occur, then we will not be able to get the accurate values. ठीक है. So this is something about the piezometer. I hope these things are clear. Is it clear, guys? Sir, how much height can go up? It depends on the pressure now. As you can see, pressure at point A will be equal to rho gh. So if PA is high, so density of fluid is constant. V is constant. H will increase. If you increase PA, H will increase. I hope you are understanding this. है ना? So we cannot define कि up to how much height it will go, but it is there. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है. ठीक है. For your practice purpose, like this, so that you can understand the piezometer more better, in a better way. Is it visible? Yes. Okay. So take 1 minute or 2 minutes. Try.
1 minute I'm giving you. Read the question, try, think, and we will discuss. Now, I hope you have seen this. Okay, so see, calculate the height of liquid column in the three piezometer tube shown in figure. While specifying the height, take bottom of the tank as datum. ठीक है, ये मेरा datum है. So here, let's say this is the liquid is with a specific gravity 0.75. So suppose this is liquid A, this is liquid B, and the third one is liquid C. ठीक है. So you know that liquid A will fill in this column up to a certain height. And in that case, if you have to solve such question, what you need to do? The best thing is take the reference. Okay. So here you can see section XX for liquid A. You can see on section XX or plane XX, you can see the pressure in tank A will be equal to rho density of liquid A G into height of column in liquid A. Okay. And what will be this? So इस केस में तो सेम ही रहेगा, because you can understand here what will be the PA. PA equal to density of liquid A, that is 0.75. Specific gravity is 0.75, so you know density will be 750 kg per cubic meter. G is 9.81 meter per second square, and the depth of this liquid is given 1.5. So what is the pressure at this point? Rho GH. तो यहाँ से आपका pressure at point on this section XX आ गया. Due to this liquid A, what will be the value? Pressure on section XX due to liquid A. 750 multiplied by 9.81 multiplied by 1.5. So that will be 11036.25 Pascal, or you can say Newton per meter square. Now you can understand here on this rise is there only due to liquid A. Okay, so height in first column will be equal to 1.5 meter as it is. You can check. HA will be equal to 1.5 meter only. Okay. Now for the second column, for the liquid B, you can see for liquid B, what will be this? You can take this as section YY, let's say, on section YY.
So pressure due to liquid A plus pressure due to liquid B will be equal to. Now tell me in second pipe, in this, which fluid will rise? Only B. Only the second fluid will rise. I hope you are understanding. But on this point, you can understand the pressure will be due to liquid A as well as liquid B. Clear? So rho B G into HB. What is the pressure here? Due to this liquid, density of liquid B, G, or height HB. Is it clear? Are you understanding this? I hope. है ना? देखो कितना इजीली आप ये भी कर लोगे. पीए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 11036.25 पास्कल. पीबी यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी 900 kg per cubic meter multiply by G 9.81 meter per second square multiply by H. What is the height of liquid B? 2 meter. That is equal to 900 into 9.81 multiply by HB. तो यहाँ से आपका लेफ्ट साइड का प्रेशर आ जाएगा 28694.25 Pascal, which is equal to 8829 times of HB. So what is HB here? 3.25 meter. Is it clear? 665. आपने शायद रफ कैलकुलेशन किया है, 9.8 लिया है मे बी आपने. ऐसे जब एच सी की बात करेंगे तो यू कैन सी, यू कैन टेक दिस एज सेक्शन जेड जेड. तो here weight will, on this side pressure will be due to A, B and C, all the three, and here only liquid C will rise. I hope you guys are understanding. Okay, which is HC. So that's how you can do the things for liquid C. Pressure due to A, pressure due to B plus pressure due to C will cause the fluid C rise in. देखा, I can read mind. In 12 plus years of journey, I learned this skill. Sometimes I can read the mind. But a GATE exam, I would suggest don't take 9.8, take 9.81 in the calculations. ठीक है. Otherwise आपका NET type answer में due to this 0.01 thing, range can change. तो PA plus PB plus PC. तो PA plus PB आपने already calculate कर लिया है 28694.25. PC you can calculate, that is density 1, height 2.5. That shall be equal to rho C 1000 G 9.81 multiply by HC. यहाँ से आपका HC आ जाएगा, जो भी आ रहा है आप लोग देख लेना. Imagine uncle interviewing us. देखो, I have studied from one of many professors, and one of them was Dr. A.K. Saluja sir. He used to share his interview experience. He is one of the, you can say, elite person, है ना? Legend, because he was the part of UPSC committee. He was the part of EAC interviews committee. He was the part of defense committee, जो defense interviews होते हैं, DRDO and defense ministry. He was the part of many such important organizations.
And as per his words, till now no one has ever able to qualify or able to answer his qualify तो नहीं बोलूंगा. No one was able to answer his questions. तो क्वालिफाई तो किया है लोगों ने, बट नो वन वाज एबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस. मतलब ही नेवर यूज्ड टू गेट सेटिस्फाइड. तो आई एम स्लाइटली लाइक दैट. व्हाट इज HC? 5.425. Actually, the thing is, no, I just feel like if you are solving a question and due to slight, or if you are answering any question in Viva interviews or anywhere, due to just few couple of words left, right, or due to just in calculation, like suppose ये आपसे पूछा होता, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू, ठीक है, सपोज ये वैल्यू पूछी होती, जैसे अभी हमारे फ्रेंड का आंसर आया था 28665, है ना. लेट्स समथिंग लाइक दिस. तो सपोज अगर इसका आंसर रेंज कुछ ऐसा होता, सपोज आंसर रेंज कुछ ऐसा होता, 680 to 28700. He did correct, we know, he did absolutely fine, but answer is not in the range, you can see. And I have seen many students, even the rank 29, 64, those candidates, rank 12 candidate, who have done just one or two questions like this. If you समझ रहे हो. तो अब हम एफएम की बात करें तो आपको एक एग्जांपल और मैं याद दिलाता हूँ, मुझे अभी याद अच्छा याद आया आप लोगों की बात से. तो आप कह रहे हो ना व्हाई आई फोकस ऑन एक्यूरेसी सो मच. देयर वाज अ स्टूडेंट रैंक 12 in 2016 paper. I will not tell the name. If you have solved mechanical operation, so you know mechanical operation, there was a question where a spherical particle was settling. If you have solved PYQs, so you must have done that. Settling in fluid, maybe water or something, I don't know. And you need to find out the largest particle diameter. It was, I think, Stokes law problem, where the particle Reynolds number was given 0.1. Okay, this is one PYQ. And the answer was 10 to the dp cube equal to 10 to the power minus 8 meter cube, or you can say dp equal to cubic root of 10 mm. Okay. Now, what is the value of cubic root of 10? I believe 90% of you can answer right now without doing using calculator. It is about 2.16. Correct? यही होती है ना. मैं भी चेक कर लेता हूँ. I'm not sure. 2.154. ठीक है. अब इसका जो आंसर है ऐसा कुछ आ रहा है. ठीक है. And the student I am talking about, he typed 2.14 and the answer range was from this. Lower limit was 2.15. Lower limit. I am not sure what was the exact range. It's been almost 8 9 years. But lower limit was this 2.15. And his answer was 2.14. I don't know how in this world what he was thinking at that time. But 2.154, everyone knows. 2.15 at least, or 2.16. And he typed 2.14. सोचो कैसे आया, मतलब टाइप नहीं, उसका कैलकुलेशन 2.14 आया था. हाउ, आई डोंट नो. ठीक है. Why I remember, because at the same day he, after exam, he came and told us, sir, these question we did, and this is the answer I got. And in this question I got 2.14. And when I solve, to provide the solutions,
I've got 2.15. And in official answer key, answer was starting from 2.15. Just because of this, he got lost 2 marks. Obviously, there is no negative in NAT type question, but he lost 2 marks. Can you imagine? 2 marks lost. And his rank was 12. Actual rank was 12. So if he would have got those 2 marks, तो उसकी रैंक क्या होती? डेफिनेटली इन सिंगल डिजिट होती. आर यू अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस? तो बहुत सारे लोग तो कट ऑफ के पास होते हैं. उनके लिए 2 2 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. 3 3 4 400 रैंक्स चेंज हो जाती हैं 2 2 मार्क्स पे. सो दैट्स व्हाई आई फोकस ऑन accuracy and words. That's why I always suggest don't do round of anything during the calculation. Take all the values up to 3 decimals at least as it is. ठीक है, 3 decimal place तक एज इट इज वैल्यू रखो और बाद में राउंड ऑफ करो अगर करना है तो आप. ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट मिस्टेक तो नहीं होंगी. और फाइनल वैल्यू को राउंड ऑफ करना अगर पूछा जाता है तो. दीज आर द थिंग्स गाइस. दैट्स व्हाई आई एम सो कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स. मैं बहुत थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं. फ्लो में बह जाता हूँ इन सब चीजों को देख. व्हेन समवन knows the thing and do such silly mistakes, I got very very angry. This is one question, guys. I would suggest you to try at your home for practice purpose. If you find any difficulty, you can discuss in the next class. ठीक है. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. द आंसर shall be 16.6 meters, something approx like that. 16.6. I'm not sure, but something like this. ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना. सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. आज काफी टाइम हो गया है. कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. कल नहीं, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 2 फेब को. ठीक है, बिकॉज द टीम इज ऑन ऑफ. दे हैव द न्यू ईयर वेकेशन. तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 2 Jan. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है. द पीपल who were asking about our 27 or 26 batch. See, these are the rankers. They didn't make any such mistakes, so they got all India rank 1. You guys can also got it. Okay. Otherwise, the offer is going on, which is valid till tomorrow, where you will get almost 55%, exact 55% discount. You just need, you can suggest to your colleagues, juniors, seniors who want to start their preparation for Gate 26 exam. And Gate Assure policy is also active now. They can use my educator code is CE009. And in Gate Assured policy, the point is if they get so they subscribe for Gate 26 exam, okay, for 12 months or above, and by chance they are not able to get the good rank in Gate exam in 26. So for the next time, they will get 1 year per.
सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, मतलब आपको उनका कहना है हम आपको एश्योर करते हैं आपकी गेट में रैंक आएगी और प्रोवाइडेड दैट यू अटेंड आवर क्लासेस मिनिमम 300 आवर्स क्लासेस यू शुड डू ऑन आवर प्लस कोर्सेस, not only special free, the plus courses minimum 300 hours, and then it is guaranteed that you will get a good rank by, and if you don't watch the classes you will not get the rank, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको कम से कम 20 लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, 300 आवर्स की क्लासेस देखनी है और आपकी गारंटी रैंक आएगी। अगर इसके बाद भी नहीं आई तो फिर आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, या फिर आपको गेट एग्जाम में रैंक आई बट आपको पीएसयू या एमटेक का कॉल नहीं आया, तब भी सोचो, मतलब जहां आप जाना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पाए, और क्या एश्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो प्लस में 16,000 रुपीज में। You just need to use my educator code AC009 or you can use अंकुर सर कोड अंकुर073, जो भी आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें सजेस्ट कर देना। बाकी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सायोनारा। और क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिन लोगों को क्लास की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मेंशन कर देना कि हम एफएम की शॉर्टकट सीरीज अटेंड कर रहे हैं, आई विल प्रोवाइड यू। अगर नहीं